Boeing 737 is the most popular passenger jets in the world. Around the world, the plane has carried more than 12 billion passengers. और ये एविएशन इंडस्ट्री की बैकबोन कहलाता है। लेकिन 1991 में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी कि which sent shudders throughout the aviation industry. Oh my lord! A deadly crash that had the investigators scrambling. There was a time when I had doubts that we'd be able to solve it. It was like he was tracking a serial killer. इसकी इन्वेस्टिगेशन को लगे तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा। The fate of the aviation industry hangs in balance, and the mystery isn't solved until more than 150 passengers are dead. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आए एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो की है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और इस शो में हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय पे अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे 1991 की एक दुर्घटना। सुबह के 9:40 मार्च 3rd, 1991। After a short 17 minutes trip from Denver, United Airlines की flight 585 is in its final approach into Colorado Springs. Flying के लिए बहुत ही सुहावना दिन लग रहा था, but there is trouble in the air. Nice looking day. Hard to believe the skies are unfriendly. There has been heavy turbulence during the flight and Colorado Springs में भी काफी तेज हवा चलने का अंदेशा है। Never driven to Colorado Springs and not gotten sick? At the controls is 52-year-old Captain Harold Green, who has around 20 years of experience and a sterling reputation. Green's co-pilot is Patricia Anderson, जो कि 42 वर्षीय हैं, जो कि एक महिला हैं। She is among the first female flying officers in United history. Flight attendants, prepare for landing. At the Colorado's Municipal Airport, flight traffic controller James Rayfield is ready to bring in United Flight 585. United 585, report the airport in sight. Got it? Yep. Airport in sight, United 585. Lower landing gear. United 585 is cleared for a visual approach to runway 35. Weather conditions, wind 320 degrees at 16, gusting at 29. जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है, Flight 585 is more vulnerable to the turbulences. पेट्रिशिया ये जानना चाहती हैं कि बाकी प्लेन जो इस एयरपोर्ट पे उतरे होंगे, उनके एक्सपीरियंस क्या रहे। Any reports lately of any loss or gain of airspeed? Yes, ma'am. 500 feet, a 50-knot loss. At 400 feet, a 50-knot gain. And at 150 feet, a gain of 20 knots. Sounds adventurous, thank you. Starting on down. एयरपोर्ट से तकरीबन 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रिटायर्ड पुलिसमैन हेरोल्ड जो हैं, वो जा रहे हैं एक लोकल फ्ली मार्केट में। A kilometer above head, Green and Patricia, they concentrate on keeping the jet online for a landing. And they are keeping the speed in control when they are making descent on the runway. Wait, a 10-knot change here. Yeah, I know. Awful lot of power to hold that airspeed.
As the United Flight 585 reaches the runway, Darnell feels something strange. A very powerful gust of winds उनके vehicle को आके लगती है और वो ऐसे लग रहा है कि वो vehicle को ही उनके सड़क से उतार फेंकेगी. Another 10-knot gain. 3 flaps. From the air traffic controller's window, James Rayfield can now see the 585 on its final approach. और जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक और आता है, the flight becomes more bumpier. Wow. We're at 1,000 feet. Then, without warning, the Boeing 737 it starts to spin out of control. Oh God, slip! 15 flaps! 15! Going up. Oh my God! Oh my Lord! Crash! Crash! रेस्क्यू वर्कर्स जो है कुछ मिनटों में ही पहुंच जाते हैं, बट उनको बोइंग 737 का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है. The shattered remains of the 38-ton plane are buried in a fire-blackened impact crater. The plane didn't skate or bounce, you know, like when a plane comes in normally and lands. It just nosed right in, and where it hits, where it stayed. And I came down here, and this is when I saw all of the. It was horrible. उस क्रैश में there were no survivors. All the 20 passengers and 5 crew members are killed instantaneously by the high-speed impact and the exploding jet fuel. In 10 violent seconds, Colorado Springs जो है वो बन चुका है site of the world's most mysterious air crashes of the aviation industry. रात होते होते investigators from the National Transport Security Board (NTSB) they have descended on at the Colorado Springs. Known to insiders as tin kickers, NTSB जो है तकरीबन साल में 2000 के आसपास एयर क्रैश एक्सीडेंट्स जो है वो मॉनिटर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं. और कितनी बार तो उनकी इन्वेस्टिगेशन इस तरह होती है कि वो जो मेटल पीसेस होते हैं फ्रॉम द फॉलन एयरक्राफ्ट उनका भी वो सब जांच करते हैं. जो मेडिकल कोरोनर होते हैं वो जिस जगह पे ह्यूमन बॉडीज गिरी होती हैं उनको रेड से मार्क करते हैं. वहीं दूसरी ओर एनटीएसबी के इन्वेस्टिगेटर्स जो मेटल पीसेस उनको देखते हैं उनको वो येलो से मार्क करते हैं. लुकिंग फॉर क्लूज टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 585. जैसे कि मास मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होती है, इट इज अ वेरी टफ टास्क फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स एज दे डिसेंडेड ऑन एनी एयर क्रैश साइट, और खासकर इस एयर क्रैश में ऑफ द फ्लाइट 585 की. और इस इन्वेस्टिगेटर्स की टीम में एक है माइकल ब्रेनर जो कि है एक्सपर्ट इन ह्यूमन परफॉर्मेंसेस, और उनका ये जॉब होगा टू फाइंड वेदर द एयरक्राफ्ट वाज crashed by human error. The area was cordoned off by police, and there were Salvation Army trucks. I got a cup of coffee, a cup of hot chocolate or something, and I thanked them for it, and they said, no, thank you, and they had this look in their eyes like, my God, you have to go into this site. Clues to the flight 585 lay mangled in that black hole. The fuselage is crushed like an accordion in that blackened hole. और बाकी एयरक्राफ्ट के टुकड़े जो हैं, they are in an area which is smaller than a football field. There was a lot of fire damage. There had been a fire afterwards, and it was all contained in a relatively small area, which just initial impression, it can be a sign that the airplane was intact. If there was a mid-air explosion or something came off the airplane, you'd expect that to be
a much larger site. My first sense that it was going to take some time to investigate the accident was the damage that we saw in the parts. When they're burnt and broken, the process always takes longer. अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन जस्ट स्टार्ट ही हुई है, लेकिन एनटीएसबी के टीम मेंबर्स को ये बात पता नहीं लगी है कि उनकी इस क्रैश में जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इट विल बिकम द लॉन्गेस्ट investigation of any air crash in the aviation industry. A clear late winter day in 1991 has become violent because of this crash, and in just 10 seconds it became so deadly. Minutes before the landing, United Airlines की flight 585 fell out of the sky in these 10 seconds. Crash! Crash! और प्लेन की स्पीड उस समय थी 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और इस क्रैश में तकरीबन 20 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर दे ऑल डाइड इंस्टेंटेनियसली। एनटीएसबी की टीम जो है इस इन्वेस्टिगेशन शुरुआत करती है इस क्रैश में। इंजन टर्बाइंस, हाइड्रोलिक प्रेशर गेजेस, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बहुत ही एहतियात से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इस क्रैश से, और उनकी फोटोग्राफ लेने के बाद उनको लैब भेजा जाता है फॉर टेस्टिंग। इस इन्वेस्टिगेशन में जो पहला स्टेप है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द एनालिसिस ऑफ द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ह्यूमन एरर जो तकरीबन 70% एयर क्रैशेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब माइकल ब्रेनर ये जानना चाहेंगे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कि क्या पार्ट मैल्कम और पेट्रिशा ने प्ले किया इस क्रैश में। This crew was, and I felt this at the time, was one of the more impressive crews that I'd ever dealt with. There was a little bit of tension release, a little bit of humor. The captain said, Never driven to Colorado Springs and not gotten sick? The first officer suggested that they add extra speed as a safety margin. The captain agreed with it. It was good interaction. Got it? Yep. Airport in sight, United 585. Lower landing gear. This is a sense of an excellent crew, caught randomly, if anything. So again, that was my first impression, is that this would be consistent more with a hardware situation. As more of the flight 585 is known, mechanical failure becomes a very likely suspect. क्रैश के कुछ सेकंड पहले ही जो प्लेन था वो एकदम अपने साइड में रोल कर गया था and it began to spin totally out of control. इन्वेस्टिगेटर्स का ऐसे मानना है कि शायद ये जो स्पिनिंग हो वो इस वजह से हो the plane might have lost one engine or one wing. लेकिन प्लेन की डेब्री को देखने के बाद ये इन्वेस्टिगेटर्स पता लगा लेते हैं कि प्लेन वाज टोटली इम्पैक्ट एट द टाइम ऑफ द क्रैश। What investigators don't know is that whether the plane's engine were working at the time of the crash. The technician examines the engine turbines. They discover that dirt has been drawn into each and every crevice, and these blades were sucking in air and spinning at the time of the crash. टेक्नीशियंस अभी ये बात नहीं जानते हैं कि इंजन काम कर रहे थे कि नहीं, किस तरह से काम कर रहे थे, लेकिन इतना तो फैक्ट उन्हें पता लग गया कि इंजन्स चल रहे थे when the plane crashed into the ground. प्लेन के जो हाइड्रोलिक प्रेशर डायल्स हैं, they have been destroyed in this crash. उनके कांच जो है वो टूट चुके हैं और जो इंडिकेटर नीडल्स थी वो भी उखड़ गई हैं अपनी जगह से at the time of the crash. But even these ravaged dials tell a tale. 15 flaps! 15! At close inspection, the investigators find a critical mark. At the time of the impact, a dent was made on the faceplate by the jarred indicator needle. और इस बात से ये बात साबित होती है कि when the flight 585 crashed, the engines were working well. We focused in after eliminating other flight control surfaces that
we thought could contribute to the role. We started looking at the rudder. Bring that up so I can take a look at it. और अब इंजन फेलियर तो रूल आउट कर दिया है इन्वेस्टिगेटर्स ने, तो इसके बाद एक और मैकेनिकल फॉल्ट दिमाग में रह जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्लेन अपने साइड पे रोल कर गया हो और इट स्टार्टेड स्पिनिंग वायलेंटली आउट ऑफ कंट्रोल। और ये बात जो दिमाग में बार बार आ रही है कि द प्लेन माइट हैव सफर्ड अ कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम ड्यू टू इट्स flight controls. The investigators quickly became suspicious of the rudder at the back of the tail. Investigators जो है अपनी एग्जामिनेशन रडर का ऑन साइट ही ट्राई करते हैं दे चेक करना, लेकिन वहां पे वो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। एरोप्लेन के ज्यादातर पार्ट आर टू क्रश्ड एंड बर्न्ड फॉर एंड दे कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, बट अ वाइटल इक्विपमेंट इज स्टिल इंटैक्ट फॉर टेस्टिंग, and it is the Power Control Unit or the PCU, used constantly during flight and especially at the time of landing. The PCU is like a car's power steering. This servo valve is very unique, that it is in effect two valves in one, and that creates a whole range of interactions that don't occur in a more conventional hydraulic valve. When the pilot pushes on the rudder pedal, the PCU uses hydraulic fluid to convert the gentle movements of the pilot into the pressure required to move the 737's rudder, which is very big. The heart of the PCU is something called the dual servo valve. इसकी शेप होती है एक सोडा कैन की तरह, और इसमें दो प्लेट्स होती हैं which slide across each other, directing the flow of the pressurized hydraulic fluid which moves the rudder. When the technician opens the power control unit, उसको दिखाई देते हैं chips of metal floating in the hydraulic fluid, and it is a disturbing find. These particles जो हैं वो dual servo valve को jam कर सकते हैं and making it difficult for the pilot to work the rudder. क्या ऐसा भी हो सकता है कि this microscopic particles can bring down the 38-ton jet, and it is difficult for Phillips to tell. ये PCU और dual servo valves बाकी एयरक्राफ्ट के पार्ट से तो काफी इंटैक्ट हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों डैमेज हो चुके हैं और काम नहीं कर रहे हैं। The airplane crashed and burnt in a pretty confined area, and there was a lot of damage to the flight control components and the things we were testing and needed to test and look at. The more damaged the components are, the harder it is to take measurements and do functional testing. To test what he has, Phillips जो है कैलिफोर्निया का एक दौरा करते हैं to the labs of the Park and Hannifin, जहाँ पे कि ये रडर कंट्रोल्स बनाए जाते हैं। The mysterious metal parts जो कि फ्लोट कर रहे थे हाइड्रोलिक फ्लूइड में, they are dismissed. फिलिप्स को ये बात बताई जाती है कि फिल्टर्स लगे होते हैं which prevent this metal chips to come in close contact with the mechanism of the dual servo valves, which flows the fluid and keeps the rudder moving. जो ये एक्सप्लेन कर सके द प्लेन सडन मूवमेंट जो हुई थी फ्लाइट 85 में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है उनको वो उस जगह से। We didn't have any absolute indication or information that we could point to that said the rudder power control unit, the servo valve, or any part of that flight control system caused that accident. फिलिप का ऐसा मानना है कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट ही हुई होगी जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन उनको कोई कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कि PCU और सर्वो कंट्रोल वेव ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस क्रैश के, सो ही हैज टू साइन ऑफ दिस टेस्ट। फिलिप्स जो है अभी एक डेड एंड पे आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक जो वेदर था, मौसम भी एक दूसरा सस्पेक्ट बना हुआ है अभी तक इस क्रैश के लिए। ग्रेग सोलोटोलो जो है एक्सपर्ट हैं ऑन दी मौसम रिलेटेड एयर क्रैशेस, तो ये अब पता लगा रहे हैं कि क्या उस दिन जो हवा चल रही थी
उसका तो कोई पार्ट नहीं है इस क्रैश में। There is a history of events where there have been airplane accidents attributed to mountain waves eroders. In 1966, a BOAC 707 near Mount Fuji disintegrated in a mountain wave eroder. जो पहाड़ी इलाकों में काफी तेज हवाएं चलती हैं, उनको बोला जाता है विंड रोटर्स कहलाती हैं। विंड रोटर्स इन द ली साइड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। और वो भी एक ली साइड में ये पैदा करती हैं फिनोमेना। Invisible, highly turbulent downdrafts are plunging down in a devastating power, और ये एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं। We found a great deal of evidence looking at the surface upper air data and talking to witnesses in the area that rotors were a possibility. Explosion, it was right over there. Solo Talo जो है, he questions many eyewitnesses and gets the account of the mountain weather on this day of the crash. And one of the most intriguing is from Harold Downwell. Oh, what the heck was that? जिनके की ट्रक को एक बहुत ही भयंकर हवा का झोंके ने छुआ था just moments before this United Airlines की फ्लाइट 585 के क्रैश से पहले. But as Greg Solotalo combs through his evidence, the theory of these mountain rotors is becoming more and more less likely. Nice looking day. Hard to believe the skies are unfriendly. Wind rotors are areas of very low barometric pressures. और अगर फ्लाइट 585 इस से गुजरी होगी, विंड रोटर्स के थ्रू गुजरी होगी, तो उसका अल्टीमीटर जो है एकदम स्पाइक हो जाना चाहिए ऊपर की तरफ, जिससे कि इंडिकेशन होता कि प्लेन और हवा में उड़ा था। There's no evidence that we saw that on the flight data recorder of 585. लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से ये बात सामने आती है कि प्लेन it showed a fast and deadly descent as the plane just fell out of the sky. इक्कीस महीने का समय बीत चुका है, जबकि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 585 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। We had put a lot of time and effort into the investigation, and we just weren't sure what had happened. It was like he was tracking a serial killer. He was frustrated that they had not solved 585. He did not want that to happen again. तकरीबन 2 साल के करीब का टाइम हो चुका है, जबकि इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या-क्या एग्जामिन किया है, क्रू, वेदर, रडर और कितने ही और छोटे पार्ट्स जो कि उस डेब्री से निकाल के उन्होंने एग्जामिन किए थे, और अभी तक इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ कुछ नहीं लगा है। दे आर स्टिल एम्प्टी हैंडेड। ये चौथी बार ऐसा होगा उसके इतिहास में कि एनटीएसबी एक रिपोर्ट पब्लिश करे जिसमें कि कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। The cause of the crash of flight 585 is still undetermined. इस रिपोर्ट की 585 की क्रैश की जो रिपोर्ट थी उसको पब्लिश करने के तकरीबन 2 साल बाद द किलर स्ट्राइक्स अगेन। तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं ऑन अ क्लियर विंडलेस डे। US Air Flight 427 is approaching Pittsburgh. Pilot Peter Germano और First Officer Chuck Ahmed are approaching Pittsburgh Airport. They are getting ready for their final approach on this airport. Folks, from the flight deck, We should be on the ground about 10 more minutes. Sunny skies, a little hazy. Flight attendants, please prepare for landing. I ask you to check the security of your seatbelt. Thank you. US Air 309, descend and maintain 6,000. As they close in on the airport, the pilots are on a lookout for another airline which is 10 kilometers away from them. Looking for the traffic. Turning 100. US Air 427. I see the jet stream.
As they passed through the turbulence left behind the other aircraft, suddenly उनका plane जो है एकदम left hand side पे roll करना शुरू कर देता है. Hold on, hold on. Hold on. Shoot! Nothing. और pilots कुछ भी कर लें, उस plane के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे. What the hell is this? What the? Go! Shoot! God. 427, emergency! Oh, shoot. Oh! Oh, God! Oh, God, no! रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं बहुत जल्दी साइट पे पहुंच जाते हैं, बट द फेट ऑफ द US Air Flight 427 is tragically clear. There is no hope for the 132 passengers and crew. The human carnage is so bad that the authorities declare this site as biohazardous. US Air 427 accident was the first US accident where biohazard suits were used, and it made it more difficult. They were uncomfortable, they were hot, and to this day, when I put on a pair of rubber gloves, for any reason, I'm instantly transformed back to the site in Pittsburgh. Captain John Cox, a seasoned 737 pilot and a flight system specialist with the Airline Pilot Association, is asked to join into the investigation of Flight 427. As coroner attempt to recover the human remains, NTSB also joins into the investigation. NTSB's chief investigator Tom Houghton knows that his investigation search for clues would be long and very painstaking. When we first arrived at the crash site, well, first of all, there was no aircraft there. There were only bits and pieces of the airplane. It wasn't really recognizable as an airplane. With the help of eyewitnesses or cockpit voice recorder और flight data recorder से information जो निकलती है, उससे investigators ये पता लगा देते हैं कि there is a very drastic similarity between 427 and the unsolved United Airlines की flight 585 में. और investigators को ऐसे लग रहा था कि ये दोनों जो है क्रैश जो है एक दूसरे की mirror image लग रही है. On its final approach, United Airlines की flight 585 जो है राइट को रोल करती है, जबकि US Air की flight 427 लेफ्ट हैंड साइड को रोल करती है. दोनों इंस्टेंसेस में जो क्रू थे they are caught surprised और थोड़े सेकंड के बाद ही दोनों प्लेन जो है एकदम धरती में क्रैश हो गए थे. Certainly the whole team was aware of the previous accident with United 585 in Colorado Springs. We try to keep that in the back of our minds and take a look at this one as to what it presents to us. और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है इस 427 के क्रैश में, तो similarities between the two crashes they are also becoming more and more. 427 के जो इंजन थे they are attached and working at the time of the crash. चाहे जितनी भी similarities निकल आए इन दोनों क्रैश में, एक सिमिलरिटी जो थी वो बहुत ही विभिन्न थी. 427 के टाइम बिल्कुल जो वेदर था बिल्कुल it was dead calm. Folks from the flight deck, we should be on the ground about 10 more minutes. Sunny skies, a little hazy. Taking a look at the flight data recorder information, the aircraft's approaching Pittsburgh. It's an extremely smooth night. There's just no turbulence at all. The pilots are relaxed. They're talking about the landing. Flight attendants, please prepare for landing. Ask you to check the security of your seatbelts. Thank you. जैसा कि 585 के टाइम पे हुआ था, ग्रेग फिलिप्स जो है will look into the mechanical failure of this 427 case. Almost immediately he makes a very promising discovery. और इस केस में much of the plane's rudder and tail are intact in this 427 case.
अब टेल में जो हाइड्रोलिक डिवाइसेस हैं उनमें भी काफी कम डैमेज हुआ है। फिलिप ये जो पार्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी भेजना चाहते हैं जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं पार्कर हैनिफिन के, जिससे कि वहां जाके एग्जामिनेशन हो सके थॉरली चीज का, और उनको जवाबों की बहुत सख्त जरूरत थी। प्रेशर जो है एनटीएसपी की टीम पे बढ़ता जा रहा है टू सॉल्व दिस केस ऑफ 427, और दोनों इंस्टेंसेस में क्रैश 585 और 427 में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज थी, लेकिन एक चीज और सिमिलर थी कि दोनों में एक ही प्रकार का एयरप्लेन था और वो था बोइंग 737 जेट। बिलियंस ऑफ डॉलर्स और पूरी एविएशन इंडस्ट्री वाज एट रिस्क, जबकि कि इन दो क्रैश के बाद सवाल उठाए जा रहे थे सबके मन में कि रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ दिस बोइंग 737 जेट। We couldn't live with the fact as investigators of having 2 unsolved 737 accidents. The airplane is in too much use, too wide a use around the world. It carries too many people every day. Unsolved was not an acceptable answer. If 427 was an undetermined accident, we could not find the cause of this accident, there was a great chance that if there was a third accident with the 737 fleet under similar circumstances, that the 737 fleet would have been grounded. Careful with it. एनटीएसपी की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें ये वाली क्रैश बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी ऑफ फ्लाइट 427, एंड इट वोंट बी इजी, आंसर्स आर स्टिल ईयर्स अवे। और 3 साल के अंदर अंदर 2 737 प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, and there have been no survivors in both the cases. Flight United 585. In both the cases, the planes were just moments away from landing. Attendants, please prepare for landing. And in both the cases, the planes were in full power and the pilots were not able to control their planes. United Airlines की फ्लाइट 585 में इन्वेस्टिगेटर्स को कोई क्लू नहीं मिल रहा था रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द क्रैश, और वही कॉज अब वो ढूंढ रहे हैं ऑफ द यूएस एयर फ्लाइट 427 के क्रैश में। As the investigator in charge, I never allowed myself to think this investigation could go undetermined. We kept on pushing and kept on researching. As long as we had things to research, we kept on going. To find their killer, NTSB की टीम कोई भी थ्योरी को रूल आउट नहीं कर रहे थे। अब उनकी थ्योरीज में सब कुछ इंक्लूडेड था कि क्या हो सकता है कि ये फ्लाइट 427 इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई क्योंकि वो एक किसी पक्षी से टकरा गई थी, और उसमें और बिजार थ्योरीज भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया था अपनी चेकलिस्ट में। They looked at electromagnetic interference. They got calls from people saying it might be Russian death rays. They considered everything. There were a couple of witnesses who gave reports of the aircraft suddenly descending and hovering before it blew up. We discounted those. But the primary suspect of this investigation is the dual servo valve. ये एक जो dual servo valve है वो एक part of the power control unit यानी कि PCU का है, which moves the 737's rudder. और United Airlines की फ्लाइट 585 में भी यही एक सस्पेक्ट था। ये पार्ट जो है पार्कर हैनिफिन ने बनाया था, और उनकी लैब जो कि कैलिफोर्निया में स्थित थे, इन्वेस्टिगेटर जो हैं इसके अंदर ढूंढ के कोशिश करते हैं कुछ जवाब ढूंढने की, और पहले क्रैश की तरह इसमें भी उन्हें कुछ माइन्यूट मेटल पार्टिकल्स दिखते हैं फ्लोटिंग इन द हाइड्रोलिक फ्लूइड। But once again, Parker and Boeing, they stick to their claim. Parker और Boeing का ऐसा claim है कि filters are designed to keep this metal debris coming in contact with the delicate parts of the metal slide, and they have done their job. Investigator Greg Phillips wants to be absolutely sure regarding this. और ये metal strips ही अगर वो slide को block कर रही हैं, तो उन्होंने कुछ स्क्रैपिंग निशान छोड़े होंगे स्लाइड पे, जहां पे कि वो कांटेक्ट में आई होंगी विद द स्लाइड्स, लेकिन फिलिप्स को कोई स्क्रैच मार्क्स दिखाई नहीं देते हैं। Another pass. Okay.
जो फिलिप्स हैं वो टेक्नीशियंस को बोलते हैं कि जितने भी टेस्ट उनके दिमाग में आते हैं फिलिप्स के, वो सब टेस्ट कराते हैं वो ऑन दीज डुअल सर्वो वेल्व्स व्हिच केम फ्रॉम फ्लाइट 427। और हो सकता है उनको कोई वीकनेस मिल जाए, और अगर कोई वीकनेस मिल जाती है उन्हें, तो इस बात का पता लग जाएगा कि क्यों दो प्लेन्स वर रिप्ड आउट फ्रॉम द स्काई, बट ही कम्स अप एम्प्टी। That unit passed all its operational tests. There wasn't any indication that it had failed, and it operated within the parameters we expected it to. Once again, the investigators are forced to focus on the pilots. Flight data recorder से investigators को ये बात तो पता लग गई थी कि plane का जो rudder था, it was deployed fully to the one side, which is called as rudder hardover. We were definitely focused on rudder, on hardover rudder, full rudder input for about 20 seconds. It can be caused either by hardware, something unknown in the hardware, or it can be caused by pilot input. फर्स्ट ऑफिसर चक अहमद, जो कि उस समय फ्लाइट 427 उड़ा रहे थे, उन्होंने वाकई में ही स्टेप डाउन हार्ड ऑन द रडर, और उन्होंने रडर को वहीं रोक दिया था एज द प्लेन प्लमेटेड डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। एक बहुत ही ग्रिजली क्वेश्चन को उन्होंने रेज किया था कि क्या वो प्लेन को जमीन में ही उड़ाना चाह रहे थे। And looking at this, and being a pilot myself, is like, this doesn't seem like rational behavior. What the hell is this? ह्यूमन एनालिस्ट ब्रेनर जो है वो बहुत ही बारीकी से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को स्टडी करते हैं, जिससे कोई वहां से तो कोई एविडेंस ना मिल पाए। What the hell? Shoot! In this case, they had microphones right by their mouths, and you can hear as well as in real life or better. You can hear breathing sounds. Yeah, I see the jet stream. कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग से ये पता लगता है कि यूएस एयर 427 का ट्रबल जो है तब स्टार्ट हुए व्हेन इट फ्लू इनटू द जेट वेक ऑफ अ डेल्टा एयरलाइंस 727, जो कि अभी उनसे कुछ देर पहले ही आगे निकला था। Both pilots are startled by the wake. I see the jet stream. The first officer breaks off at the end of a sentence. I see the jet stream, and there's no more discussion of the jet stream or anything else. They both focus. Something happened here. Captain says, "Sheesh." It was such a smooth flight that it was a momentary jolt that they just hadn't anticipated. And with that, the pilots got on the controls and immediately, put in a rudder input. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो इतने थंपिंग साउंड भी रिकॉर्ड करता है ऑफ द जेट स्ट्रीम वेक as the 427 flies through it. As 427 encounters this turbulence, Brenner hears something unusual. First Officer Ahmed begins to grunt. The grunting is unusual. The controls are designed so that pilots don't need to grunt. They're specially designed around human capabilities. So to have someone grunting is typically a sign of an emergency. फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनको मैच करने से ये पता लगता है ब्रेनर को कि चक अहमद ने जो ग्रंटिंग शुरू की थी वो शुरू की थी सेकंड्स आफ्टर ही पुश डाउन ऑन द पेडल्स ऑफ द रडर and 3 to 4 seconds after the turbulence affected the 427. What the hell? On their own, the cockpit voice recorder proved very little. But ऐसा लगता है कि the crew were not trying to smash their plane. कुछ हुआ था ऐसा जिसकी वजह से वो भी एकदम सरप्राइज हो गए थे। उन्होंने जितना जल्दी रिएक्ट कर सकते थे रिएक्ट किया, लेकिन जो भी उन्होंने किया उससे कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे वो प्लेन के ऊपर। 427 क्रैश को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन हैज स्टॉल्ड। अब तक जो है 2 737 जेट्स हैव गॉन डाउन इन स्टार्टलिंग सिमिलर ways
और इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी कुछ भी पता नहीं लगा पाए। We were all frustrated as months wore into years. What were we missing? It definitely took a toll in their personal lives. They worked incredibly long hours. They never stopped thinking about it. We were going up against an aircraft that had an incredible safety history. It was really everything you could see for 30 years. This has been a great airplane. We were trying to prove that there was something wrong with the straight A student. It clearly was on his mind. He at one point had a nightmare about it where he dreamed that he was in front of a congressional committee that was grilling him on now there had been a third 737 crash, and in Tom's dream all the cameras were pointing to him, and a congressman asked, "Why didn't you ground the fleet?" इन्वेस्टिगेटर्स को अब एक ब्रेक चाहिए इस केस में, और बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां देखें, और द ट्रेल ऑफ एविडेंस इज आल्सो गेटिंग कोल्डर। East Wing 517, you're clear for landing. जून 9, 1996 को फाइनली उन्हें ब्रेक मिलता है, जिसकी वह इतने सालों से तलाश कर रहे थे। और उस दिन कैप्टन ब्राउन बिशप इज ऑन हिज फाइनल अप्रोच टू रिचमंड, वर्जीनिया, व्हेन हिज जेट विदाउट एनी वार्निंग स्टार्ट्स टू रोल ऑन द राइट हैंड साइड, और उनकी फ्लाइट है ईस्ट विंड एयरलाइंस। We didn't know to what extent, but we knew we had a problem with the rudder. I turned the yoke the opposite direction and stood on the opposite rudder pedal. The pedal didn't move for me. तकरीबन 30 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए जो उनका प्लेन है 737, it bangs precariously to the right hand side, और कैप्टन ब्राउन बिशप जो है वो हर संभव कोशिश करते हैं to prevent the jet from rolling over. और उसके बाद suddenly the unknown forces that had kept the jet, they let go of it, snapping the wings back to horizontal. In a matter of seconds, it released itself and went back to normal. We had started the checklist. Almost before I could finish the sentence, all of a sudden there was just a wham. For the second time, the 737 is pushed towards to one side. तकरीबन 30 सेकंड के लिए the jet 737 has its life of its own. और उसके बाद फिर से rollover stops as quickly as it had begun. After the second time, I looked at the first officer and I said, "Declare an emergency. Tell the controller we have flight control problems." And as they slow down to land, the risk increases. और अगर थर्ड रोल ओवर होगा तो उनकी एयर स्पीड उतनी नहीं है कि वो रिकवर कर पाएंगे तीसरे रोल ओवर से। I did at some point tell my first officer to look out the window to find a dark spot. It was nighttime and we were looking to avoid a neighborhood or a populated area. And he very calmly responded that, "Hey, here's a spot over here." लेकिन तीसरा रोल ओवर नहीं होता है। Luckily, Bishop flies the 517 flight fast and high, and he lands safely on the runway. Taxiing in is when I realized my legs were shaking. We got the aircraft to the gate, and I did pick up the PA to make an announcement to try to explain what had just happened to these people. And I'm picking up their microphone, I realized there was nothing I could say to make this any better. And probably for the first time in a long time, I was at a loss of words. So I simply put the microphone down and let it go at that. But Bishop won't remain speechless for long. अगले दिन तक the investigation team had arrived in Richmond.
flight data recorder was undamaged, an airplane undamaged. We launched to the scene. The airplane literally didn't move, stayed at its location in the airport until we got down there. There were a lot of FAA, a lot of NTSB, and they all wanted to talk to us very badly. It gave the NTSB a tremendous break because suddenly they had a 737 that had a rudder incident that was intact, and they had a pilot who was alive and who could talk about it. I think they were much happier to have the airplane than me. I think the airplane probably gave them more to research than I ever could. इन्वेस्टिगेटर्स ये जल्दी पता लगा लेते हैं कि ईस्ट विंड एयरलाइंस की फ्लाइट 517 में जो हुआ था वो बिल्कुल ही सिमिलर था टू फ्लाइट्स 427 and 585 earlier. They can discover why Bishop 737 rolled over, and they may be able to crack two mysterious air crashes of 427 and 585. And when we said, well, what happened? They said there was something wrong with the rudder pedal. The pedal wouldn't go down. I was standing on the rudder pedal and I couldn't get it to go down. My God. With Bishop's first testimony, the investigators quickly focused their attention on the East Wind's rudder controls. The power control unit is removed, checked and tested repeatedly. To the frustration of everyone, the unit performs normally. We tested that aircraft as is. It was intact. We went through it completely. We did flight tests with it, and it passed all tests. After a 5-year hunt for clues, a third mysterious near accident on the Boeing 737 और उसमें एक live pilot भी है to answer the investigators' questions. Tom Houter still needs the evidence to crack his case. He tries to push the rudder controls of Flight 427 a little harder. One fellow mentioned a test they had done in the military of a thermal shock, where if you had the actuator being very cold and put in very hot hydraulic fluid, it would cause it to react in strange ways. So we put together a thermal shock test, and this test was extreme to say the least. On August 26, 1996, in Valencia, California, the NTSB investigators, they gathered for the torture test on the 427's PCU. After soaking it in dry ice, the PCU is blasted with nitrogen gas to stimulate the minus 40 degrees Celsius temperature at 10,000 meters. Then it is quickly injected with superheated hydraulic fluid and given the command to start working. As we were standing there listening to the actuator move left and right, it stopped. And it was not commanded to stop. It just jammed. Stopped working completely. Take a look. System investigators Greg Phillips अब order देते हैं कि unit को it has to be taken apart and checked for any scratches, and they find none. Look at that. Doesn't leave a trace. It is a crucial breakthrough to solve the almost perfect crime. Not only they have proved that the valves which control the rudder they can jam, but they have also proved it does not leave any mark. Investigators ने इस बात का पता लगा लिया है कि जो rudder है of the most popular jet in the world, they can jam at the right time. It's an enormous discovery, but another surprise waits for the investigators. October 15, 1996, ये 5 साल बीत चुके हैं, and पिछले 5 सालों से NTSB की जो टीम है, वो it is trying to crack its most difficult case. 2 completely different but seemingly same accidents.
यूनाइटेड एयरलाइंस 585 की क्रैश में 25 लोग मारे गए थे, पैसेंजर्स और क्रू को मिला के, और 3 साल बाद यूएस एयर की फ्लाइट 427 में तकरीबन 132 लोग मारे गए थे। और अब कितने ही हंड्रेड्स ऑफ क्लूज एग्जामिन करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स हैव मेड अ सरप्राइजिंग ब्रेक थ्रू। और अब एक टेस्ट के बाद जिसने कि प्रूव किया कि हाइड्रोलिक वॉल्व व्हिच कंट्रोल्स द 737's rudder can jam in the right circumstances. But the surprises are not over. The most important breakthrough came when a Boeing engineer, examining the data from that test, discovered some numbers that indicated the valve at that point had actually reversed. Whoa. It's a stunning revelation. Not only the servo valve jammed, but it can function in reverse also. और इसका मतलब ये हुआ कि पायलट अगर रडर पेडल को दबा रहा है to control the rollover of the plane, the rudder might work in reverse in opposite direction and it can cause a fatal accident. And the reversal is like driving your car. You turn to the right, it goes left. You're not going to figure out this failure mode until you go off the road. And in these cases, that's what the pilots were faced with, something so unusual that they didn't understand what was happening. What the hell is this? They had evidence now that the valve was unique, that the valve not only could jam, but would reverse. 427, emergency! That would explain why the first officer, Chuck Emmett, would keep his foot on the rudder pedal, because he's thinking, why isn't the plane going right? And he's feeling the plane go to the left. Till the last, Chuck Emmett tries his best और वो रडर पेडल को पूरा दबा के रखे हैं कि हो सकता है कि उनका रडर उनकी कमांड को ले ले और इट कम्स आउट ऑफ दिस स्पाइरल। और इस बात का उन्हें पता भी नहीं होगा चक अहमद को कि स्टीयरिंग द प्लेन राइट इनटू द ग्राउंड। Ever driven to Colorado Springs and not gotten sick? Flight attendants prepare for landing. इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को पता लगा चुके हैं अब तक कि 427 का क्रैश किस वजह से हुआ था और अब वो अपना सारा फोकस कंसंट्रेट कर रहे हैं ऑन द यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 585। Another 10-knot gain. Going back to Colorado Springs, you could follow a progression of what the captain was doing. He's close to the ground, and suddenly, under rudder reversal, he puts in a little bit of pedal. The pedal violently pushes his leg back. Oh, God! Slip! 15's left. 15. Rudder reversal certainly fits what I know about this crew and how it fits. We were able to show the failure mode. It matched the flight data recorder from each aircraft. It fit like a glove. So we now had a lot more information we could apply to United 585. And based on that, we redid the accident report. Oh, my God! From rudder reversal to the impact, it just took less than 10 seconds. और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 585 के पास तो उतना टाइम ही नहीं था पायलट्स के पास कि वो अपनी फ्लाइट को बचा भी पाते। After the aftermath of these accidents, sweeping changes were made into the safety of Boeing Jet 737 and all across the aviation industry. New training procedures were followed to train the pilots when some unusual things happens on the plane at the time of the flight. Boeing 737 के pilots को अब ट्रेनिंग दी जाने लगी है कि how to cope up with rudder hardover and rudder reversal. The scenario of the US Air 427 accident, if the crew had the information that we have today, I believe they would have landed safely in Pittsburgh that evening. FAA ने Boeing को ये हिदायत दी थी कि वो ड्यूअल सर्वो वॉल्व को फिर से रीडिजाइन करें जिससे कि रडर प्रॉब्लम्स की जो है आगे भी ये कोप अप कर सके पायलट्स। और बोइंग ने कितना ही लाखों डॉलर खर्च करे टू रिप्लेस दी सर्वो वेल्व्स ऑन दी
existing 737 jets all over the world. One thing we don't like at the safety board is to have an undetermined accident, because then we can't make a change to improve safety. So out of US Air 427, United 585, we have a much safer 737 fleet. It took NTSB's tin kickers almost 10 years to solve the crashes of United Airlines Flight 585 and US Air Flight 427. और ये बन गई थी the longest investigation in aviation industry. There are still some people in aviation who don't think the NTSB got it right. But I became convinced after talking to many people, pilots, engineers, people at Boeing, and spending a lot of time with the investigators, that they did get it right. Since these valves which have been changed, dual servo valves change करने के बाद ऐसा कोई भी similar accident नहीं हुआ है on the world's most popular and most profitable plane in the world. तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड, आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं अपने फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी 3 अलग अलग इंसिडेंट्स की, जिसमें कि 2 क्रैश हुए थे और एक लकीली प्लेन बच गया था। अगर आपको मेरे शो से रिगार्डिंग कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhamri.r@gmail.com। तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और करेंगे हम चर्चा उस आने वाले शो में एक नई दुर्घटना की, नई डिजास्टर की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।